Hello children, I hope you all are happy and safe today. Welcome to our special English hour. Here, every day, we will learn something new in a fun and exciting way. यहाँ हम हर रोज कुछ नया सीखेंगे, लेकिन एक मजेदार तरीके से. Are you all ready to have some fun? Let us begin our session with a tongue twister. Children, do you all remember the tongue twister that we tried in our previous session? हमने हमारे पिछले सेशन में जो टंग ट्विस्टर ट्राई किया था, क्या आप सभी को वो याद है? 4 fine fresh fish for you. Now let us try to say the tongue twister together. 4 fine fresh fish for you. Now let us increase the speed a little. 4 fine fresh fish for you. 4 fine fresh fish for you. Very good. Now let us increase the speed a little bit more. And this time, as we all know, we have to say the tongue twister 5 times with the same speed. Are you all ready? Make sure that you try to say the tongue twister with me. Let's go. 4 fine fresh fish for you. 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 Yes! Finally, we said the tongue twister 5 times with the same speed. I hope all of you were also able to say the tongue twister with me. I hope you all had fun saying the tongue twister with me. Now, children, did you all know that we use science in our daily lives? क्या आप जानते हैं कि हम साइंस का इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं? Yes, everything that we do has science behind it. Eating, breathing, cooking, driving, all of these have science behind it. In fact, everything that we use also has science behind it. The cloth that we wear, the talcum powder that we use, the soap and the shampoo that we use, all of these things have science behind it. Do you think that science is important in our lives? क्या आपको लगता है कि साइंस हमारी जिंदगी में महत्वपूर्ण है? Yes, science is very, very important in our lives. It is because of science that we are able to understand and explain how things work. साइंस की वजह से हम चीजों को समझ और उन्हें समझा पाते हैं. Now, do you like to do science experiments? क्या आपको साइंस एक्सपेरिमेंट्स करना पसंद है? In our chapter today, we will learn how to do a few simple science experiments at home. आज के हमारे चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह कुछ छोटे-छोटे साइंस एक्सपेरिमेंट्स को हम घर पर कर सकते हैं. Before we move on to our chapter, let us learn some new words. चलो अब हम कुछ नए शब्द सीखते हैं. And I would like all of you to listen to me carefully. Our first word is electricity. Electricity.
electricity. We need electricity to charge our phones. Our second word is instrument. 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 My favorite musical instrument is the guitar. Our third word is experiment. 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 Rahul loves to do different science experiments. Our fourth word is iron. 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 Gates are made of iron. Our fifth and the last word is bowl. 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 Priya loves to drink her soup in a bowl. Now it's time to read the chapter Science Fun Fair together. Please open page number 60 of your My English textbook. If you have a textbook, please point your finger on the words with me. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो अपनी उंगली को मेरे साथ शब्दों पर रखें. But if you don't have a textbook, please don't worry. Listen to me carefully. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे ध्यान से सुनिएगा. Also, while reading the chapter, I would like all of you to look for the 5 new words that we just learned. Hello. I am going to show you how this balloon sticks to the wall without glue. See, first I rub it on my head. Then I stick it to the wall. Isn't it fun to watch? There is no trick in this. This happens due to electricity. Here we saw how the little girl rubbed a balloon on her hair and then tried to stick it to the wall. Can you tell me how did the balloon stick to the wall? Yes, the balloon stuck to the wall because of electricity. The name of this electricity is static electricity. यहाँ हमने देखा कि कैसे वो नन्ही सी बच्ची ने बलून यानी गुब्बारे को अपने बालों में रब किया और उसे दीवार पर चिपका दिया. क्या आप जानते हैं कि ये बलून दीवार से कैसे चिपकी? जी हाँ, ये बलून दीवार से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चिपकी. इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नमस्ते. I want to show you a simple musical instrument. These are all glass bowls. Each bowl has some water in it. This bowl is full of water. This last bowl has very little water in it. Each bowl has more water than the bowl on the left. Now, I'll tap each bowl gently with this spoon. Did you hear that? What a musical sound!
Do you want to try it? Please be careful. Thank you. Here we saw how the little girl poured water in different bowls. But in each bowl, she poured different levels of water. In some bowls, she poured little water, and in some, she poured more. And then she tapped on these bowls using a spoon. And guess what? Each of these bowls made a different sound. And just like that, music was created. यहाँ हमने देखा कि कैसे उस नन्ही सी बच्ची ने अलग अलग बोल यानी बर्तनों में पानी भरा था। हर एक बोल में उसने अलग लेवल का पानी भरा। कुछ बोल्स में उसने कम पानी भरा और कुछ में उसने बहुत पानी भरा। उसके बाद उसने एक स्पून के इस्तेमाल से हर एक बोल पर टैप किया और हर एक बोल से अलग आवाज आने लगी और इसी तरह म्यूजिक इन बोल से बन गई। Good morning. I am going to present an experiment. You will love to watch this. This bottle holds vinegar. This balloon holds baking soda. Now, I will fit the balloon on the mouth of the bottle like this. Now, I will lift the balloon. Then the soda will fall in the bottle. And then, just watch. The balloon blows up. When you mix soda and vinegar, a gas known as carbon dioxide forms. The balloon blows up because of the gas. Thank you for watching my experiment. Now this is a very interesting experiment. The little boy here used vinegar, baking soda, a bottle and a balloon for this experiment. First, he put the vinegar in the empty plastic bottle and then he put the baking soda into the balloon. After this, he put the balloon on top of the bottle and guess what? The balloon started to blow up. Can you tell me how this happened? Yes. The baking soda from the balloon fell into the vinegar. Now, when baking soda and vinegar mix together, it forms a gas called carbon dioxide. And this gas helps the balloon to blow up. ये एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। यहाँ हमने देखा कि कैसे उस नन्हे से बच्चे ने सबसे पहले बॉटल में विनेगर डाला। उसके बाद गुब्बारे में उसने थोड़ा बेकिंग सोडा डाला। उसके बाद गुब्बारे को बॉटल के ऊपर लगा दिया। फिर देखते ही देखते गुब्बारा फूलने लगा। ये गुब्बारा इसलिए फूला क्योंकि वो गुब्बारे के अंदर जो बेकिंग सोडा थी वो विनेगर में मिल गई। जब विनेगर और बेकिंग सोडा मिल जाते हैं वो एक गैस बनाते हैं। इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से ये गुब्बारा फूलने लगा।
है ना मजेदार? I am going to show you something that looks like magic. But it's not magic. It is science. This is a magnet. It attracts towards itself everything that is made of iron. Just watch. It draws the clips through air. I'll put the clips in a glass bowl. It draws the clips through glass. I'll pour some water in the bowl. It draws the clips through water and through glass. Do you want to try it? Try it with paper. Thank you. In this experiment, we learn about magnet. Magnet is a very special object. It attracts everything made of iron. Yes, you heard that right. इस एक्सपेरिमेंट में हम मैग्नेट यानी चुंबक के बारे में सीखेंगे। मैग्नेट एक बहुत ही खास चीज है जो आयन से बनी हुई सारी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। आयन यानी लोहा। In this experiment, we saw how a little boy put some iron clips in a bowl. He then tried to pull these clips using a magnet. And guess what? The clips attracted to the magnet. Then he poured some water into these bowls along with the clips. And guess what? Even this time, the iron clips attracted to the magnet. इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि कैसे उस नन्हे से बच्चे ने एक बोल में कुछ लोहे के क्लिप्स रखे थे। फिर उसने मैग्नेट की मदद से उन्हें खींचने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। उसके बाद उसने उस बोल में थोड़ा पानी डाला और इस बार भी वो क्लिप्स मैग्नेट से चिपक गई। It was such a wonderful experiment, right? Today, we learned about 4 different science experiments that we can do at home. Our first experiment showed us how by rubbing a balloon on our hair, it sticks to a wall. This was because of static electricity. हमारे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने सीखा कि कैसे गुब्बारे को अपने बालों में रब करने पर वो दीवार से चिपक जाते हैं और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। फिर हमने सीखा कि कैसे कांच के कुछ बोल्स में अलग-अलग लेवल पर पानी भरने पर उसमें से अलग-अलग तरह की आवाजें आती हैं। Then we learned how by pouring water in different glass bowls, it makes different sounds by tapping on it. Then we saw how baking soda and vinegar mix to form carbon dioxide. And this helps the balloon to blow up. फिर हमने देखा कि कैसे बेकिंग सोडा और विनेगर मिल जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से गुब्बारा बॉटल के ऊपर फूलने लगता है। And finally, we saw how magnet attracts everything made of iron. और अंत में हमने देखा कि कैसे मैग्नेट यानी चुंबक आयन से बनी हुई सारी चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। Wow, we learned so many science experiments today. Would you all like to see how to create a musical instrument?
क्या आप सभी ये देखना चाहते हैं कि हम घर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह बना सकते हैं? Let us go! Children, the very first step is to collect a few glass bowls. सबसे पहले हमें कुछ ग्लास यानी कांच की बोल्स इकट्ठे करने हैं. Here I have collected 4 glass bowls. यहाँ मैंने 4 कांच की बोल्स इकट्ठे किए हैं. The next step is that we need a spoon. हमें एक स्पून की जरूरत है. और फिर water. हमें थोड़े पानी की जरूरत है. In these glass I have water. इस ग्लास में मैंने पानी इकट्ठा किया है. Now, the next and the most important step is to fill water in all of these bowls. इन चारों bowls में हमें पानी भरना है. But what we need to make sure is that we fill different levels of water in each of these bowls. इनमें से हर एक bowl में हमें अलग-अलग लेवल पर पानी भरना है. Let me show you how. Now, if you look at the bowls carefully, you will see that I have filled very little water in this bowl. इस bowl में मैंने बहुत कम पानी भरा है. And then I have filled a little more water in this bowl. इस bowl में मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी भरा है. And then in this bowl I have filled a little more water. इस bowl में थोड़ा और ज़्यादा पानी भरा है. And finally in this bowl, I have filled the entire bowl with water. इस bowl को मैंने पूरा पानी से भरा है. So we have different levels of water in each of these bowls. हर एक bowl में अलग-अलग level पर पानी है. Now it's time to do the most interesting step. अब सबसे मजेदार step की बारी है. We have to pick our spoon and then tap very lightly on each of these bowls. स्पून को उठाकर हर एक बोल पर हल्का सा टैप करना है. Let me show you how. Could you hear that? Wasn't that wonderful? And just like this, we can create amazing music. This instrument is called जल तरंग. इस इंस्ट्रूमेंट को हम जल तरंग कहते हैं. Now, all of you can have some fun playing this interesting musical instrument. I hope you all like this session. Today, we learned how important science is in our daily lives. And we also learned how we can do 4 simple science experiments at home. आज हमने सीखा कि साइंस हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. और हमने ये भी सीखा कि कैसे हम 4 सिंपल साइंस एक्सपेरिमेंट्स घर पर कर सकते हैं. Now, I would like all of you to create a musical instrument using bowl, water and a spoon at home, just like we did in our session today. And make sure
you play this musical instrument for your friends and family. अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएं पानी, बोल और एक स्पून की मदद से, ठीक उसी तरह जैसे हमने हमारे सेशन में सीखा। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने परिवार और दोस्तों के सामने बजाकर भी दिखाएं। I will see you all in the next session. Until then, stay home and stay safe. Bye bye.